Good evening all, you're watching the news now and I am Bindya with the news at 5. Let's have a look at the headlines first. J&K Light Infantry conducts attestation parade, recruits 460 this year. Indian Air Force signs deal with French Air Force, purchases Mirage 2000 fighter aircraft on board. And Ravi Shastri hints on stepping down as Team India coach after T20 World Cup. And now the news in detail. The Jammu and Kashmir Light Infantry Command today conducted its attestation ceremony in Dansal Training Ground. Lieutenant General M.K. Das and the Commandant of Officers Training Academy, Chennai, were present to review it. Calling Jammu and Kashmir the proud crown of India in his press briefing, Lieutenant General M.K. Das said that the army and the administration are stark towards the youth and are working for their betterment. Somewhere there has been a lack in guidance of youth in J&K that led them astray, but the avenues of betterment have been opened for them by the Indian Army from time to time. Quoting this, he referred to the 162 Jack Light Infantry and said that the army can make these misguided youth the best soldiers for reform. But for that, the youth will have to come forward. The increasing number of soldiers of Jammu and Kashmir in Jackli is a message for those who mislead these youths by training to sell their innocence. He added that the armed forces are well equipped and now well trained to tackle any technical error and threat to the nation. Have this ingrained quality to be security conscious much more than others. And therefore our regiment has exceptional and outstanding record in all counterinsurgency situations. And therefore all these situations which are unfolding in the country or in our neighborhood, I am more than confident that the Jackli regiment will continue to excel and be the lead agency in fight against terrorism. पहले मैं जैकलाई रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के होने के नाते, इस परिवार का मुखिया होने के नाते वीरों की धरती जम्मू में अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारी रेजिमेंट का जन्म ही 1947 में एक कठिन हालात में हुआ, जबकि हमारे वॉलंटियर्स यानी स्वैच्छिक फोर्स ने कबालियों का, जो कि पाकिस्तान द्वारा मदद दिए जा रहे थे, उनका बढ़ चढ़ कर सामना किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से हमारे रेजिमेंट बढ़ती। Strengthening the Indian forces further, the Air Force leaps up to sustain its fleet of Mirage 2000 fighter aircraft. The Indian Air Force has signed a contract to buy phased-out Mirage of the French Air Force as per government sources. This is the second such agreement that the Indian Air Force has signed for buying Orchid Air Farms that will help one of the most potent aircraft fleet to continue for longer in service. The sources said further that India had signed a contract with French companies earlier as well for supplying old Mirages, which reached Gwalior last year and have helped significantly in improving operational availability. In continuation to the My Town, My Pride project by Municipal Corporation Jammu, the Jammu Mayor Chandra Mohan Gupta, in presence of MP Jugal Kishore Sharma and Deputy Mayor Advocate Purnima Sharma, kick-started the construction project of a sewer line from Bahulochan Chowk that will cater to clear and divert the sewerage from 4 major drains coming from wards around Bahu Fort area towards Tawai. प्रोजेक्ट वहां पहुंचना चाहिए। ये प्रोजेक्ट वहां पहुंचा है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट माननीय जुगल किशोर जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम और स्पीकर रहे माननीय कविंदर गुप्ता जी, मेरे साथ कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर का दायित्व निभाते हुए हमारी पूर्णिमा शर्मा जी, और यहाँ की स्थानीय पार्षद हमारी शारदा जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे विनय जी, मंडल अध्यक्ष लक्कीपुरी जी, यहाँ के जो हमारे जितने भी स्थानीय वार्ड प्रेसिडेंट हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ आज आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जिस चौक में हम खड़े हैं, इस चौक का नाम भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पास करके हमारी पार्षद ने रखा था बहुलोचन पर नाम से। आज यहाँ पर ये उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे अति खुशी हो रही है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं जो लाइट के पोल भी लग रहे हैं पूरे शहर में, जितनी भी रोड शहर को आती हैं, जो डिवाइडर हैं, वहाँ हम लाइटें लगा रहे हैं। और लगभग 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, और जितना कचरा शहर से इकट्ठा होगा आने वाले समय में, सीवरेज ट्रीटमेंट जो हमारा नेफेड का एक प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 100 करोड़ का, उसका काम भी शुरू हो गया है। सारे काम मैं ये कहता हूँ जो हमारी कोलिशन सरकार थी
या मेंबर पार्लियामेंट साहब, ये सारे प्रोजेक्ट ये लोग दिल्ली से सैंक्शन करवा के उनके प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने चलाए हुए हैं, हम आगे उनको बढ़ा रहे हैं और उनकी इनाग्रेशन कर रहे हैं, उनको स्टार्ट करवा रहे हैं, उनको काम में तेज़ी दे रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो आदरणीय प्रधानमंत्री का एक सपना है 370-35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक, हर जगह तक, हर गली मोहल्ले तक विकास पहुंचे, उसके लिए हम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के 45 पार्षद हैं, अपने सीनियर जो हमारे नेता। The Kashmiri Pandit displaced people living in Jakti tenement in Nagrota, Jammu tried to block the national highway in a loud demonstration on the stoppage of their relief. This led to a scuffle with the police, stopping them from closing the highway, and the protest turned furious. These displaced Kashmiri migrants are saying that both their life and livelihood depend on the relief, which has been kept on hold for last several days. Seeking help from the government of India and the LG administration, Kashmiri Pandits appealed for relief release. रिलीफ रिलीज़ हो जाए। मैं भी इस छोटे से बच्चे को लेके आई हूँ, तो इसी रिलीफ पे गुजारा चलता है हमारा। तो अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम कैसे चलेंगे, घर कैसे चलाएंगे? सिर्फ रिलीफ पे ही गुजारा चल रहा है, कमाने वाला तो कोई नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, रैली निकालेंगे, क्या पता हमें जल्द से जल्द रिलीज कर लेंगे। इसलिए अगर हम घर से यहाँ तक आए हैं तो इतना 5 मिनट का रास्ता क्यों नहीं तय करने दे? हाँ जी, ये इसीलिए किया कि हमारे रिलीफ बंद है, 1 महीना हो गया है। जिनके पास सिर्फ रिलीफ है वो क्या करेंगे? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस देनी है, वो क्या गवर्नमेंट आएगी देने के लिए? हमें तो रोड तक भी जाने नहीं देते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। यहाँ आप चलो पीछे, हम क्या बेकार हैं जो यहाँ रोड पे खड़े हैं? किस लिए हैं? In a protest against the installation of electricity meters by PTD, today women of Umpura area of district Gurgaon staged a protest against the department by blocking the road. The women raised slogans and demanded that the meters be taken back. Due to this protest of women on the roads, many vehicles were seen as stranded for several hours. Moving on to the world of sports, sports has always been an encouraging means to express one's potential and capability other than academics and cultural activities, which is why with the advent of vaccination and control over spread of COVID scenario, various sports events are being conducted with certain restrictions. To boost the morale of the youth of a general area of Rajouri and Riyasi, a cricket tournament is being organized by the local army unit at Samot. Various teams are participating from the areas of Darhal, Kotranka, Buddal and Dhasana. The event is witnessing overwhelming participation and the youth of the area are highly excited and enthusiastic regarding the conduct of this tournament. Along with youth, prominent personalities have also appreciated this initiative and look forward to conduct of more such events in the area. As the nation is celebrating a PM's birthday for 20 days, Baba Chanchal held an exciting rally today to greet the entire nation on having a sincere Prime Minister after ages. He also announced 15 days celebration including distribution of ration among the needy, langars and yagya havans and ritual ceremonies of hymn recitation for coming fortnight. जन्मदिन बनाया जाएगा उसका नाम पर। पूरे भारत को मैं लख लख बधाई देना चाहता हूं। मैं पूरे भारत को यह कहना चाहता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री हमें बार बार नहीं मिल सकता। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए और देश को नंबर 1 बनाना चाहिए। दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकता है। वो हिंदुस्तान का एक बब्बर शेर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत, जय माता। From the world of entertainment, actor Sonu Sood lands in trouble in tax evasion case. Actor and his associates are alleged to have evaded rupees 20 crore tax. A case has been filed under FCRA violation. The Central Board of Direct Taxes alleged that Sonu Sood and his associates evaded a tax of rupees 20 crore and are claimed to have got income in the form of bogus unsecured loans from many bogus assets.
As per the reports of a national daily, Team India head coach Ravi Shastri intends to step down from his role of upcoming ICC T20 World Cup, as in an interview the former Indian batsman said that he has achieved everything and there was nothing he wants to take over. While explaining the better performances in the Test and T20 cricket, the head coach said that it was worth remembering for him that this is the ultimate to beat Australia and win in this COVID time. And that's all in this news bulletin. For latest update and more news, stay tuned with the TNN web and keep reading the e-print and daily newspaper of the News Now. Jai Hind.